Hello and welcome. Today we are going to see some examples on vector moment, and couples. Already we have studied what is a vector moment. To get the vector moment, we need force acting at some point. And always we are calculating vector moment of that force about some fixed point. That's why we need that fixed point also. The basic method is you just draw a perpendicular from the point from which you are calculating vector moment to the line of action of the force. Calculate the distance or vector and then f bar and that position vector of the point where the force is applying with respect to the fixed point. You take its cross product, you will get vector moment of that force about that point. If you take its magnitude of that vector moment, you will get just moment. Alright, so let us have some examples regarding vector moment of various forces acting at different points and some conditions are given. So वेक्टर मोमेंट निकालने के लिए आपको फोर्स की जरूरत होती है. फोर्स जिस पॉइंट पे अप्लाई होता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है और आपको हमेशा वेक्टर मोमेंट अबाउट सम फिक्स पॉइंट निकालना होता है. तो आपको वो फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की भी जरूरत होती है. जो फिक्स पॉइंट है वहां से आप वो जो आपका फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उसके ऊपर आप परपेंडिकुलर डालेंगे और वो जो परपेंडिकुलर है उसको आप वेक्टर में ट्रांसफर करोगे. नाउ दैट वेक्टर एंड दैट फोर्स इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको वेक्टर मोमेंट मिलेगा. इफ देयर आर मोर देन वन फोर्सेस दैट वी कॉल एज अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, then if there is a system of forces, then definitely there will be a resultant of that system. So we know that we already proved that theorem that the vector moment or moments of forces and their sum, algebraic sum of vector moments of the forces is equal to vector moment of the resultant of these forces. Using that fact, we are going to solve next two examples. So let's have these two examples. So this is first example. Read carefully. First, if three forces P, Q, R act along the sides BC, CA, AB of a triangle ABC taken in order. Okay, that means हमको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा. उसको हमें नाम देने होंगे A, B, C और उसका जो जैसे कि AB है, BC है और CA है तो A to B, then B to C और then C to A इस डायरेक्शन में हमें मार्किंग करना होगा उन साइड्स ऑफ ट्रायंगल को और फिर जिस साइड के अलोंग जो भी फोर्स का नोटेशन है वो हमें लिखना होगा. ओके, देन प्रूव दैट इफ द रिजल्टेंट पासेस थ्रू, रिजल्टेंट मींस ये तीन फोर्सेस जो दिए गए हैं P, Q, R, इनका रिजल्टेंट passes through the in center of triangle ABC. Oh my God! अब in center of triangle ABC, तो in center किसको बोलते हैं?
how we can define in center of a triangle? So you just draw the triangle and then draw a circle inside that triangle. That means circle is inscribed in that triangle. तो वो सर्कल जब आप ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ करोगे, देन सर्कल विल टच 3 साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल. नाउ वो जो सर्कल है वो इंटीरियर पार्ट में आपने ड्रॉ किया. उसी सर्कल का जो सेंटर है, क्योंकि सर्कल को तो सेंटर रहता ही है, वो जो सेंटर है सर्कल का जो आपने अंदर ड्रॉ किया था ट्रायंगल के, उस सेंटर को उस ट्रायंगल का बोला जाता है क्या? इन सेंटर. इन सेंटर, क्योंकि इन मींस अंदर ड्रॉ किया है और वहां से उन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट पास होता है. तो ये कंडीशन दी गई है, तो वी हैव टू शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ these 3 given forces P, Q, R and their addition P plus Q plus R is equal to 0. That we want to show that. So for this purpose, सबसे पहले तो हमें डायग्राम निकालना होगा. तो डायग्राम में हम सबसे पहले निकालेंगे क्या? ट्रायंगल. यू जस्ट ड्रॉ ब्यूटीफुल ट्रायंगल. ओके, अब इनको नाम देना है, तो गिव द नेम. तो आप यहां से भी शुरू कर सकते हो. तो दैट वर्टेक्स आई एम कॉलिंग एज ए. ओके, इसको हम नाम देते हैं बी और इसको हम नाम देते हैं सी. इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाम हमने दिया. ओके, अब इसकी डायरेक्शन आपको तय करना होगा. तो कंप्लीट ऑर्डर देखिए, यहां ए बी दिया है, ए बी, तो आपको ए से बी की डायरेक्शन देनी होगी. तो आई एम गिविंग दिस डायरेक्शन ए बी. फिर है बी सी, तो बी टू सी की डायरेक्शन लाइक दिस, ये डायरेक्शन. एंड देन सी ए, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी सी ए की. ओके, तो ये कंप्लीट ऑर्डर वाला ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया. नाउ देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट द इन सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल. दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ सर्कल inside that triangle that will touch all the 3 sides of that triangle. Okay, so now just draw this circle. Okay, now this point here I'm giving you name D, so I'll use the another ink to denote the name. Okay, so this is point D. Okay, this is point E, and this is actually touching to this side. यहां पर टच नहीं हो रहा है, बट आपको याद रखना है कि यहां टच हो रहा है. ओके, एंड दिस इज पॉइंट F. Now this is a center of this circle, and now this is denoted by O. And that O is nothing but in center of triangle ABC. आप सब तो जानते हो कि जब भी हमें वेक्टर मोमेंट यहां से निकालना है, वेक्टर मोमेंट का वैसे कोई जिक्र क्वेश्चन में नहीं है, बट वी नो दैट द फोर्सेस आर गिवन. ओके, तो फोर्सेस पहले लिख लेते हैं. P जो फोर्स है अलोंग द BC है, तो ये हो जाएगा आपका P अलोंग द BC. Q is along the CA, तो ये यहां Q है. एंड R is along the AB, तो ये आपका फोर्स है R. ओके, अब अगर ये फोर्स P है, P का डायरेक्शन B to C है, एंड नाउ आई वांट टू फाइंड इट्स अ वेक्टर मोमेंट और जस्ट मोमेंट, स्केलर मोमेंट. तो यहां से आपको इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा. एंड वी नो दैट ये टेंजेंट है, BC इज टेंजेंट टू द सर्कल. दैट्स व्हाई इफ यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू दिस टेंजेंट, इट इज always perpendicular. So OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC,
and OF is perpendicular to EB. Fine. Now this OD, OE and OF will become radius of that circle. And we know that radius is always constant throughout that circle. So that's why we can denote that radius by R. So this is R, this is R, this is R. Fine. Now, what is the picture? What I am observing, what I have drawn? That is a triangle. That name of vertices are A, B, C. The P is along BC, Q is along CA, and R is along AB. Then O is the in center of that triangle. Then join OD, OE, OF, and we know that OD is equal to OE is equal to OF is equal to, we already denoted by R, so is equal to R. What we have drawn, that only we have to explain in our answer book. तो इसके लिए आपको बहुत कुछ याद करने की कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है. आपको जो दिख रहा है, आपने जो ड्रॉ किया है, आपके दिमाग में जो चल रहा है, बस उन सारी चीजों को बस आपको एक्सप्लेन करना है. सो वी कैन एक्सप्लेन लाइक दिस. let O be the in center of a triangle ABC. After that, you have joined out that OD, OE, OF. So join OD, OE and OF. Let R be the radius of in circle, and we know that radius is equivalent to OD, OE and OF. Therefore, you can write that OD is equal to OE is equal to OF is equal to R. Right. Now, sum of moments of these given three forces of P, Q, R about point O is equal to P, the magnitude of the first force, P, into the distance, perpendicular distance from the point O to that BC, and that is OD. OD is equal to R, plus another force is Q, the magnitude of the force Q, and we want to find moment of that Q about O. So draw the perpendicular O to AC or CA, and that is OE, and that is again R, and finally capital R into R. So this is the sum of moments of these three given forces. All right, let me call this expression is an equation number 1. Fine. Now let P plus Q plus R, if you add all these three forces, then the net addition of these three forces will become magnitude of resultant force, be magnitude of resultant force.
but the resultant force is passing through the incenter. But resultant force is passing through O. And that's why when we are interested to find the moment of this resultant force about the point O, then that resultant force multiplied by the perpendicular distance from the O to that resultant. But the resultant is itself passing through the point O. That's why we cannot draw perpendicular through the point O to the resultant force, because O itself lies on the resultant force. मान लीजिए कि ये resultant force है like this, और ये resultant force पे already O है. So that's why what we are doing, perpendicular from O to O, it has no sense. That's why its distance is 0. Therefore, we can write like this. Therefore, moment, I can use again another ink. So moment of resultant force about O is equal to the magnitude of the resultant force, that is P plus Q plus R, into the perpendicular distance, and that is 0. This is 0, and therefore you are getting 0. And we know that, what you know that? We know that sum of moments is equal to moment of the resultant. Okay, and therefore here you are getting sum is P into R plus Q into R from the equation 1. R into R is equal to, this is 0. Now we can take R, small r, as a common, is equal to 0. R is the radius of the incenter, and radius of circle never becomes 0. And the product of these two quantities is 0. इसका मतलब ये है कि ये नॉन जीरो है तो ये जीरो होगा. So therefore P plus Q plus R is equal to 0. तो ये इस तरीके से आपने ये प्रूव कर दिया. Now let us see another example. So three forces of magnitudes P, Q, R act along the sides. Again the same thing of sides BC, CA, AB of a triangle ABC taken in order. Prove that if the resultant of these three forces passes through the circumcenter. Now here the word is circumcenter instead of incenter of a triangle. Then we have to show that P into cos of A plus Q into cos of B plus R into cos of angle C is equal to 0. For this purpose, firstly we will draw this triangle. So I am giving the name A, this is B, this is C. Okay. Now what is the meaning of circumcenter? Incenter means draw the circle inside the triangle, and circumcenter means draw a circle outside the triangle. So in this case, the triangle will be inscribed in circle. So this is a circle, and the center of this this circle is called as a circumcenter. So it is a circumcenter denoted by O. Okay. Now for getting the radius, you join the vertices and this O. So this is OA. Now join this O and B straight in the straight direction, and now O into C. So OA, OB and OC will become radius of the circumcircle. That's why I can denote these radius by one letter, that is R. Okay.
Now A to B direction is like this, B to C direction is like this, and C to A direction is like this. So along the BC, the force is P, along the CA the force is Q, and along the AB the force is R. Okay. Now if I in the similar fashion like that previous example we have solved, we need this perpendicular distance, OD. Similarly OE like this, and OF. But here, using this radius and this, how we can calculate OD. Once we got OD, our work is over. Now OD is a perpendicular distance, then force is R, so force magnitude R into OD plus force of magnitude P into OE. So this can is OE, perpendicular. So P into OE and Q into OF. This is OF. And that will equal to the resultant force and its moment. But the resultant force of these three forces passing through the point O, therefore there is no perpendicular distance. And in that case, for the getting a moment of the resultant, we can get, or we can take the perpendicular distance from the point O to the resultant is 0, and therefore right side will become 0. So we explain all the things what we have drawn, and then you write like that. What we are observing. So we know that this angle C, this is the angle C. Okay, this is the angle C, and this is angle AOB. This one. This is a double than angle C. So it is equal to 2 times angle C. It is obvious हाई स्कूल लेवल थ्योरम. तो ये एंगल जो होता है, ये एंगल इस एंगल से हमेशा डबल होता है. ठीक है, ओके. लेकिन मुझे इंटरेस्ट है इस एंगल में, इसको मैं अल्फा बोलता हूं. सो लेट अल्फा इज इक्वल टू एंगल AOD. ठीक है. अब ये इन अ ट्रायंगल AOD, सो ट्रायंगल AOD and triangle BDO. तो देखिए रेडियस इक्वल, दोनों ट्रायंगल की ये साइड इक्वल, देन OD दोनों को कॉमन कंबाइन और कॉमन साइड है तो वो इक्वल दोनों का. और सर्कल में ये भी थ्योरम हमने देखा है कि जब हम सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये कॉर्ड के दो बाइसेक्शन होते हैं. तो AD और DB दोनों इक्वल, मतलब ये जो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल है. और जब साइड सारे करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट कंडीशन SSS, साइड, उसके हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. सो आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ठीक है. अब ये जो अल्फा है, ये अल्फा और ये एंगल भी सेम हो जाएगा, तो यहां भी अल्फा होगा. सो वी नो दैट देयरफॉर 2 अल्फा इज इक्वल टू एंगल AOB, and the angle AOB is nothing but 2 times angle C. So 2 times alpha is equal to 2 times angle C, to get cancelled, and therefore alpha is nothing but angle C. So consider this triangle. Therefore, in triangle AOD triangle दिख रहा है आपको, AOD ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे. अब ये जो अल्फा है वो C है, तो हम उसका कोसाइन निकालेंगे, cos of C. तो अल्फा के एडजेसेंट साइड दैट इज OD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज R, and therefore OD is equal to R into cos of C. OD की तो जरूरत थी हमें. सिमिलरली OE जो आएगा वो भी आएगा R cos. देखिए यहाँ जो C आया वो A और B हमने यहाँ कंसिडर किया था, तो बचा कौन? C, इसलिए यहाँ C एंगल आया. अगर मैं ये यहाँ पर यूज करता हूं तो यहाँ B और C
these are the end points of this chord. The remaining letter is A. Therefore, इस केस में यहाँ का एंगल A आएगा और यहाँ का एंगल B आएगा. So in this way, you can find OE is equal to R into cos of B और C है वहां पर, तो A लिखना होगा, and OF is equal to R into cos of B. ये आपको पहले डिराइव करना है अच्छे से, और उसके बाद आप ये लिखेंगे sum of moments of P, Q, R about O is equal to P into, देखिए P किधर है, P यहाँ है, P के लिए है OE, ओके, P के लिए है into OE प्लस Q into, Q किधर है, Q इधर है, तो उसके लिए है OF, ओके, OF एंड प्लस R के लिए होना चाहिए OD. So it is equal to P, but OE is equal to R cos of, just see, OE cos A, okay, cos of A, then Q, OF था आपका R cos of B, and plus this is R, OD is R into cos of C. Okay, you can take R is common, so you will get P into cos of A plus Q into cos of B plus R into cos of C. So this is the sum of moments of these three vectors about the point O. But moment of resultant of these three vectors P, Q and R about O is equal to resultant force, whatever it may be, resultant force of PQR into perpendicular distance from the O to the O, that is OO. And the OO means what? There is no distance, that means it is 0. So it is equal to 0. And we know that sum of moments of the separate vectors and the moment of the resultant of these both are equal. So you put in this fashion, we know that sum of moments of forces is equal to moment of the resultant of the given forces. All right, given forces. तो इसलिए ये जो आपका R P cos A plus Q cos B plus R cos C ये बन जाएगा equal to 0. And this is the radius of the circle and it will never equal to 0. Therefore, obviously, this bracket will become 0. Therefore, P cos A plus Q cos B plus R cos C is equal to 0. This is the end of our solution.